Hello everyone. So I'm sure some of you have received the V School call for GDPI process, and the next stage is to write an essay to clear PIQ, and then the final stage is interview. So essay questions are already given in the form, so I'm sure you are not worried about it. But most of the people do not know what is PIQ. What is that pre-interview questions? So I have created a video to solve that doubt. What is PIQ? What kind of question can appear in PIQ, and how to handle those questions? So we'll see the details about PIQ in this video. My name is Lokesh Agarwal. If you have not subscribed to this channel, do it now so that you can check more such videos. Let's start the process. So you have received this kind of letter from V School. The application state is submitted, and congratulations, your application is shortlisted for the phase 1 selection process of PGDM. Now you have to basically confirm the program for the preferences. Now first stage, you have to confirm the program, and I'll suggest as most of the company comes for marketing profile. So if you do not have any other specific preference, then I'll suggest then you should choose marketing, because chances of getting placed in marketing field will be pretty much. And you have to submit the descriptive essay as per the program preference as chosen. So if you are going for technical field, then definitely there are certain questions which are based on languages, technical languages, C, Java, and all. Otherwise, if you are choosing marketing, finance, and HR, then the questions related will be towards management only, which you can answer easily. As I think this is not live, you have to just submit it. So you can take the help of other medium as well to write the good answer. Now, if we talk about the weightage, this is the 100% breakup, how they are going to rate you on various parameters. So first they will check your CAT Z score, whatever is maximum, they will take the percentile, and the weightage is 40%. So let's say if a person is getting 90% in 90 percentile in CAT, and the other person who got a call who got 80 percentile in CAT, so chances and the weightage obviously will be given more to that people who got more percentile in CAT. So weightage is pretty high, and chances of converting your call will be higher if your percentile is higher. But again, everything now depends on this stage, PI. So if you do well in PI, then again, even if you have less score, then also you can convert your call. So if we see the breakup, 40% weightage given to CAT Z score, academic 10 12th, graduation 50% is given, the weightage is 15%. And this pre-interview questionnaire and personal interview question has been designed to assess your individual aptitude and personality attributes. The weightage is again high, that is 40%. Extracurricular activities, sports, awards, achievement, if you have district level, national level, and academic diversity, the weightage is 5%. So total makes it 100%. So merit position of the above parameter will be used for offering admission to the program. So make sure if you have not done pretty well in your CAT or ZAT score, you do pretty good in this particular aspect so that your chances of converting this call will be higher. So let's see the pre-interview round. Now, this again, you got a mail, pre-interview questionnaire notification. Dear aspirant, this pre-interview question will be conducted virtually. Completing the pre-interview questions is mandatory as it constitutes an integral part of the overall personal interview process, for which weightage is 40 marks, as I have mentioned in my earlier slide. So PIQ has been designed to access your individual aptitude and personality attributes. So I'll tell you what do they check in PIQ. Your PIQ responses and performance at the interview together will help V School know you better. This enables us while selecting student who will be best fit for the program and successful professional career going forward. So this becomes a very important stage, PIQ, because whatever answer you mark, this is going to be submitted to the interviewer for the personal interview round. So you cannot just mark your answer like this only. You have to be go prepared so that you can do this section pretty well. So the overall process, the PIQ is given for 2 hour slot. No extra time will be provided. Each section is time based, and once begin must be completed within the given time for that particular section. Complete the PIQ using a single device only. Any change in the device midway will need to be authenticated. Google Chrome browser, and you need to just charge your laptop, desktop, and webcam must be used during PIQ. So here it is a live process where you have to
uh, do it in the time limit slot of 2 hours. Now, what is PIQ? Now, this is the important question. What is that PIQ? Pre-interview questions. So now PIQ will comprise, guys, 6 sections. Here there are 4 sections. Situation-based question. There will be 4 sections, and one section will be on written communication on given topic. It's same as WAT. So one topic will be given and where you have to write it. And one section on technology awareness. Whatever technologies are going on right now, like let's say Chat GPT is a very new thing which is hot topic. So they can ask something on Chat GPT. There can be certain topic about AI, artificial intelligence, data science. What are the new development which is happening in the technology field? Robotics, all these things, right? So you have to go prepared about the technology awareness, what is happening these days in technology field. That can be anything. Again, I have already shared the current topics which you should go prepared. Need not to be current topic, it can be anything, it can be abstract topic as well. So you have to think on the spot, take 1 or 2 minutes, check my earlier video, then how to write VAT or essay, then you will get an idea. And the responses, whatever you give the response in PIQ, that responses will be shared with the interviewer for the PI round. So as I mentioned, that this becomes a very important part, because whatever you are mentioning here, that is going to be shared with interviewer for the PI round. So that response should be given carefully. The total time is 2 hours, but the test duration is only 95 minutes. Other formalities will be completed within 15-20 minutes. Okay, so 120 minutes में से 95 minutes is for test. Every section will have specific time. So overall, this section will have this PIQ will have 6 sections, and 4 section will be on situation based question. So understand what is that situation based question. इसमें क्या आने वाला है, इसमें हम इसको कैसे हैंडल करेंगे, that we are going to discuss in the next slide now. So that is clear. Technology awareness is clear. Now understand what is that situation based question. Here situation will be given and you have to mention that what will you do in that situation. So let's take an example. So situation based question होते क्या है, questions on giving range of different situation that a student might experience in his career ahead. तो कुछ situation दी जाएंगी and you have to check how do you handle those situation in the in that particular moment and in that particular situation, in that particular instances. How do you handle that? How, which suggestions, which action you suggest, that is very important. For each situation, a number of possible actions are suggested. There will be a list of 4 to 5 actions. They will suggest that these are the action. You have to choose that which action you will suggest. Okay, there are usually around 4 to 5 action, but this vary. तो इसमें रैंकिंग बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, रेटिंग बेस्ड भी आते हैं, रैंकिंग बेस्ड भी आते हैं, या ऑप्शन बेस्ड जैसे हमने बोला, यू हैव टू चूज मोस्ट लाइकली, लीस्ट लाइकली, दोस काइंड ऑफ क्वेश्चन विल आल्सो अपीयर. तो आप सिचुएशन में कौन सा सजेशन दोगे, कौन सा एक्शन लोगे, वो चेक करा जाता है. Student has to choose between these possible options and judge which is the most effective course of action to take in the given situation. Sometimes they will ask most and least both. तो most कौन सा होगा, least कौन सा होगा. SBQs are always multiple choice. No answers other than the option listed are allowed. तो आपको लिखना नहीं है, you have to just choose among the options given to you. तो options जो होते हैं ना बहुत close होते हैं. आपको सारे ऑप्शन पढ़ के लगेगा यार ये भी हो सकता था, ये भी हो सकता था. Options choices are very close. So you have to read that situation very carefully, guys. Very carefully. तो आपको सारे ऑप्शन ठीक लगेंगे, यार ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी करता है, मैं ये भी करता है. एक एग्जांपल लेते हैं, आई थिंक इट विल बी मोर क्लियर. तो आपको आइडिया लग गया. सिचुएशन दी जाएंगी, एक्शन सजेस्ट करने के लिए बोले जाएंगे, रैंकिंग हो सकती है, रेटिंग हो सकती है, मोस्ट लाइकली, लीस्ट लाइकली हो सकता है. ठीक है, तो एग्जाम्पल देखते हैं. जैसे ये सिचुएशन दे दिया, उसे सिचुएशन दे दिया, यू आर वर्किंग एज ए ग्रेजुएट ट्रेनी इन ए लार्ज बैंक. इसको ना पहले सोल्यूशन देखने से पहले खुद से आंसर करना कि मैं क्या मार्क करता. ठीक है, तो पॉज कर देना इस वीडियो को, क्वेश्चन पढ़ना, फिर मेरा सॉल्यूशन देखना, एंड यू विल रियलाइज कि हाँ यार ये तो हमने सोचा ही नहीं था. वी आर गोइंग टू मार्क अ डिफरेंट आंसर. बट अगर आप उस तरह से सोचोगे जैसे मैं बता रहा हूं, तो चांसेस ऑफ गेटिंग इट करेक्ट विल बी हायर. सिचुएशन इज, you are working as a graduate trainee in a large bank. While undertaking your placement with the customer service team,
you take a call from an upset client. He is claiming that he was expecting a refund on some banking fees he was wrongly charged for, but he was not received till that. He explains that a colleague of yours promised the refund would be in his account today, but the money has not arrived yet. He is getting more upset and is raising his voice to you. What should you say to him? अगर आप इन चारों ऑप्शन को पढ़ोगे ना, ये चारों ऑप्शन आपको ठीक लगेंगे. What would you say to him? I would do all I can to help you with the issue. If you give me your account details, I will investigate what has happened here. Okay. Let me check with the colleague you mentioned about what situation is. If you can hold for a couple of minutes, I'll speak to them and we'll be back with you in no time. ये भी ठीक लग रहा है. Sir, I can hear that you are really upset, but I need you to calm down so that I can help you. ये भी polite way में बात कर रहा है, ये भी ठीक ही लग रहा है. And I'm sure there is a logical explanation for this. If you give me your detail, I'll look into it for you. इसमें भी कोई दिक्कत नहीं लग रही मुझे तो अगर आप ऑप्शन देखो चारों ही ठीक हैं. तो अगर आपने एक बार सिंपली पैसेज पढ़ा, आपको चारों ही ठीक लग रहे हैं. इनमें से आपको बताना है कि मोस्ट इफिशिएंट कौन सा है और लीस्ट इफिशिएंट आप क्या करोगे. सजेशन आप कौन सा दोगे, मोस्ट लॉजिकल एंड लीस्ट लॉजिकल. अब इसको थोड़ा गहराई में सोचते हैं, ध्यान से देखना. सिचुएशन में you are working as a graduate trainee. You are just a trainee, guys. You do not have any kind of authority to give any kind of solutions over there. You are just a trainee over there. And while undertaking a placement with the customer service team, you take a call from upset client. He is claiming that he was expecting a refund and he is talking about colleague of yours promised. So that colleague is responsible. You are not the person who is in charge over there. You cannot take any kind of decision or you do not have any kind of authority to check the account details at all. So you do not answer those situation or you do not handle those situation by saying that give me your account details and I'll check. You are not the person. Got the difference now? पहली बार में पढ़ने में सारे ठीक लग रहे थे, बट अगर आप थोड़ा डीप में जाके पढ़ोगे क्या सिचुएशन है, कौन है पिक्चर में, कौन रिस्पॉन्सिबल है. यू आर नॉट द रिस्पॉन्सिबल. यू हैव नॉट प्रॉमिस्ड एनीथिंग, राइट? सो व्हाट इज द बेस्ट एक्शन अमंग दिस? द बेस्ट एक्शन अमंग आउट ऑफ दीज फोर ऑप्शन इज द सेकंड वन. Let me check with the colleague you mentioned about what the situation is. If you can hold for a couple of minutes, I'll speak to them and will be back with you in no time. So now here you are mentioning the exact action that what is best for that person. So जो भी responsible है उस act के लिए, जिसने भी promise किया था, you are saying कि मेरे को उससे बात करने दो. First I'll check the situation is and then I'll give you the exact details and exact situation कि क्या हो सकता है. तो out of the four options, you are not giving any suggestion from your side. You are just asking to hold for a minute और जो responsible बंदा है जिसने वो claim किया है उससे मैं बात करके आपको बताऊं. तो बेस्ट कौन सा है? मोस्ट इज दिस सेकंड वन. एंड लीस्ट कौन सा हो सकता है इसमें? अब लीस्ट के क्लोज चॉइसेस हैं. देखो, पहली बात तो ये कि आप अकाउंट डिटेल्स उससे नहीं ले सकते हो क्योंकि ये अगेन यू कैन नॉट इन्वेस्टिगेट व्हाट हैज हैपेंड हियर. तो यू आर नॉट द पर्सन हु इज इन चार्ज एंड यू कैन इन्वेस्टिगेट. यू आर नॉट इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी कि आप उसको इन्वेस्टिगेट करने लग जाओगे. यहाँ पे आप ठीक है, आप काम डाउन कर रहे हो, इट्स ओके. बट क्योंकि वो कस्टमर ऑलरेडी अपसेट है, उसको सोल्यूशन ये तो नहीं दिया आपने कि भाई काम डाउन हो जाओ. दिस इज नॉट द सोल्यूशन ही इज गोइंग टू हियर. ठीक है. एंड अगेन आई लुक इनटू इट फॉर यू. तो गिव मी योर डिटेल्स, आई लुक इनटू फॉर यू. तो डिटेल्स आप नहीं मांग सकते हो. लेकिन इसमें मेरे को जो सबसे लीस्ट लग रहा है आई थिंक वो है द फर्स्ट वन, जिसमें आप इन्वेस्टिगेट करने की बात करो उस सिचुएशन को. यू कैन नॉट इन्वेस्टिगेटिंग, यू आर जस्ट ए ट्रेनी. तो आप जो सोल्यूशन दे रहे हो बेस्ट, फिलहाल वो इंपॉर्टेंट है. तो बेस्ट सिचुएशन में ये कि आप कलीग से बात करके उसको सिचुएशन का आंसर करोगे. लीस्ट काउंट डाउन इज इट्स अगेन वेरी सिंपल सा सोल्यूशन, ये भी ठीक ही है. तो लीस्ट वाले में मेरे को लग रहा है बहुत क्लोज चॉइसेस हैं. आउट ऑफ दीज थ्री विच आई थिंक द लीस्ट इज द फर्स्ट वन. एक और एग्जाम्पल देखते हैं. यू आर वर्किंग इन ए कॉल सेंटर. ये ऑलमोस्ट सेम सिचुएशन है.
for a major UK telecommunication company, you have received a call from a customer who has been waiting in for an engineer who has failed to arrive within the scheduled time slot. The customer is upset and is talking in a raised voice. Of the following option indicated, which would be the most effective and which the least effective action to take first of all? Again, the same similar situation. वहां पे पैसों की बात हो रही थी, यहाँ पे बेसिकली एक इंजीनियर था जो टाइम पे नहीं पहुंचा है एंड कस्टमर अपसेट हो रहा है. ठीक है, तो आप क्या बोलोगे उसको? Apologize the customer and say you will arrange a reschedule. Now this is again, guys, how can you do reschedule appointment? वो बंदा हो सकता है अपने उस अब मीटिंग के लिए, उस काम के लिए छुट्टी लेके बैठा हो, आप कैसे रीशेड्यूल कर सकते हो अपॉइंटमेंट? तो ये तो बहुत ही खराब सोल्यूशन है कि आप उसको बोल रहे हो कि मैं आपका रीशेड्यूल अपॉइंटमेंट कर देता हूँ बिना कुछ डिस्कस करे हुए. तो दिस इज अगेन नॉट ए गुड सोल्यूशन. सेकेंड देखते हैं, लिसन टू द कस्टमर फीडबैक एंड टेल देम यू कैन अंडरस्टैंड व्हाई दे आर अपसेट एंड that it must be very inconvenient for them. Again, this is not the solution. You are just trying to calm down. You are not providing any kind of solution over there. They are looking for the solution. तो ये भी कोई अच्छा solution तो नहीं है. Explain that the engineer has a very busy schedule and it's difficult for her to always be on time, but you are sure she will arrive soon. तो आप उसको empathy दे रहे हो और आप बता रहे हो कि भैया उसका बहुत बिजी शेड्यूल है इसलिए वो हर बार टाइम पे नहीं पहुंच सकती. तो यार अगर टाइम पे नहीं पहुंच सकती और उसका बिजी शेड्यूल है तो आपने वो अरेंज ही क्यों किया उस टाइम पे? आपको तो ये पहले से ही पता होगा. तो अगेन दिस इज नॉट द वे टू से कि इंजीनियर का बहुत बिजी शेड्यूल है और वो टाइम पे इसलिए नहीं पहुंच पाई. तो आउट ऑफ दीज थ्री आई डू नॉट थिंक एनी इज द गुड सोल्यूशन. एंड फोर्थ देखते हैं, आस्क द कस्टमर टू होल्ड while you contact the engineer to establish where she is. Now this is the exact condition और सिचुएशन जहां पे आप उसको आराम से हैंडल कर रहे हो कि भैया मैं पूछता हूँ है कहाँ वो. एग्जैक्ट प्रॉब्लम तो आप पूछो ना, रीशेड्यूल करने से पहले आप यहाँ पे रीशेड्यूल डायरेक्ट कर दे रहे हो. पहले पूछो तो सही वेयर शी इज. तो पहले इंजीनियर से बात करो, पूछो, एंड इफ शी इज नॉट एबल टू अराइव ऑन टाइम देन यू कैन टेल द क्लाइंट कि शी इज गेटिंग लेट बिकॉज ऑफ सम रीजन. देन यू कैन अपोलोजाइज. अभी आप अपोलोजाइज भी मत करो एंड देन यू कैन डिस्कस इट. तो दिस इज द बेस्ट सोल्यूशन, नो डाउट. एंड लीस्ट अगेन आई देखो, लीस्ट फिर से मुश्किल है तीनों में से जज कर पाना कि तीनों में से कौन सा है लीस्ट. लेकिन मुझे जो लीस्ट लग रहा है अगेन आई थिंक रीशेड्यूलिंग. हाउ कैन यू डू इट रीशेड्यूलिंग यार? अपॉइंटमेंट अपने आप से कैसे रीशेड्यूल कर सकते हो कि मैं उसका रीशेड्यूल कर देता हूँ? तो रीशेड्यूलिंग हो सकता है उसको उसके बाद टाइम ही ना मिले, उसने आज उस पर्टिकुलर दिन के लिए टाइम निकाला हो. तो ये आई थिंक इज द लीस्ट इफेक्टिव. और परेशान हो जाएगा और वो अपनी वॉइस रेस करने लग जाएगा. हाउ कैन यू डू दैट? तो ये इट विल बी अ नेगेटिव इम्पैक्ट जैसे आप ये बोलते हो एंड दिस विल बी द मोस्ट इफेक्ट. तो ये हो गया सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन. मैंने आपको दो एग्जांपल दिए, आई थिंक आपको आइडिया लग गया होगा. इसमें कभी कभी जो क्वेश्चन आते हैं वो रेटिंग बेस्ड भी आते हैं. टेलर्स कुछ रिस्पॉन्सेज दे देगा, उसमें फिर आपसे रेटिंग पूछेगा कि इसको रेट करो, कौन सा काउंटर प्रोडक्टिव है 5 4 3 2 1 के बेसिस पे, इफेक्टिव है, वेरी इफेक्टिव है. जो भी सिचुएशन दी है उसको आपको रेट करना होगा 1 2 3 4 5 पे कि ये मेरा ये स्लाइटली इफेक्टिव है या वेरी इफेक्टिव है, उसको रेट करो. तो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं. टेल द एम्प्लॉय टू डू इट अगेन 1 2 3 4 5. तो यहाँ से आपको जो मैंने एग्जांपल दिया आई थिंक उससे आपको काफी आइडिया लग गया होगा कि हमें इस सेक्शन में करना क्या है. तो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बस, तो इसको ढंग से हैंडल कर लेना. बाकी वैट तो है ही, और टेक्नोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन पढ़ के चले जाना जो मैंने आपको बताया. मेन मेन टेक्नोलॉजी जो इस वक्त एडवांसमेंट चल रहा है उसमें क्या क्या आ रहा है वो एक बार पढ़ के चले जाना. ठीक है, तो ये सेक्शन आपका बढ़िया हो जाएगा. कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए आई थिंक इसके बाद. चलो फिर, थैंक यू एंड गुड लक गाइस. सो इफ यू like this video, then do not forget to press the like button, and if you have not subscribed the channel yet, you can do it now. Okay, see you, bye bye.